Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime, and now the news in detail. Amid tightened security arrangements in the national capital, Delhi police on Thursday issued a travel advisory urging passengers to reach railway stations, metro stations and the airport well in advance to avoid delays during mandatory checks. This comes after a car explosion rocked the national capital on November 10th near the Red Fort complex, killing 12 people and injuring several others. According to the advisory issued by Joint CP Delhi Milind Dumbre, in view of the heightened security arrangements in the national capital, all passengers are advised to reach the railway stations, metro stations and airport well in advance. As per the advisory, passengers travelling by train have been asked to arrive at least 1 hour before the scheduled departure, while those using the Delhi metro should reach 20 minutes prior to their train's departure. For international flight passengers are advised to reach the airport at least 3 hours in advance. The advisory has been issued to ensure smooth security checks, avoid last-minute inconvenience and facilitate timely boarding amid the intensified security measures in and around major railway stations, metro stations and the airport of Delhi. Authorities have appealed for public cooperation to maintain safety and ensure seamless travel arrangements during this period of heightened vigilance. The Supreme Court today expressed serious concern over the worsening air pollution levels in Delhi and urged senior lawyers to attend hearings virtually, noting that wearing masks alone was not enough protection. Describing the situation as very serious, the apex court questioned why several senior lawyers had chosen to appear physically despite the availability of video conferencing facilities. The court's remarks came as Delhi woke up to yet another morning blanketed in thick smog, with air quality remaining in the severe category for the third consecutive day. A severe AQI level poses significant health risks even for healthy individuals and can severely impact those with respiratory or cardiac ailments. Air pollution across the national capital region remains grim, with stubble burning in neighboring states continuing to be a major contributor to the toxic haze. Visuals from across the city showed dense pollution obscuring the skyline, with buildings and roads barely visible. According to data from the Central Pollution Control Board, Bhawana recorded the highest AQI level at 460 at 8 am, while NSIT Dwarka reported the lowest at 216. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah on Thursday condemned the blast near New Delhi's Red Fort, which killed at least 12 people, while also reaffirming the ideals of peace and brotherhood, which the people of Jammu and Kashmir espouse. While condemning the alleged terror attack in Delhi, CM Abdullah said that it is only a few people who have ruined peace and brotherhood in the region, and that is not fair to characterize every Kashmiri as being associated with terrorism. फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देखना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं
उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि उसको इन चीज़ों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला ख़त्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। अब ये सवाल जो लोग इन चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जनाब, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं। हम तो सिर्फ हुकूमत का हाथ बटा सकते हैं हालात को नॉर्मल रखने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। The central government informed the Supreme Court on Thursday that the investigation into the Air India Ahmedabad crash is being conducted by Indian authorities in accordance with the mandate laid down by the International Civil Aviation Organization. The Solicitor General of India, Tushar Mehta, appearing for the centre, submitted that the victims of the crash include foreign nationals as well. This, Mehta added, requires the investigation to be handled as per the international regime, which is followed in air crashes. During the hearing, the Supreme Court, after hearing the centre's oral submissions, asked the petitioners, the father of deceased Captain Sumit Sabharwal and an NGO, Safety Matters Foundation, to file their counter-replies to the centre's submissions. In this regard, during the hearing today, Senior Advocate Gopal Sankar Narayan and Advocate Prashant Bhushan, appearing for the petitioners, Pushkar Raj Sabharwal, who is the father of Captain Sumit Sabharwal, the pilot of the Air India flight that crashed near Ahmedabad airport on June 12th, and Safety Matter Foundation. Another petitioner sought a court-independent probe into the crash. Bhushan stated that as per the rules provided by the government, an accident of such a serious nature requires a court-ordered inquiry. President Draupadi Murmu on Thursday was symbolically handed over 8 cheetahs by her Botswana counterpart Duma Gideon Boko at a nature reserve near Gaborone on the last day of a state visit. The two heads of states reached the Mokolodi Nature Reserve about 10 kilometers south of capital Gaborone earlier in the morning and took a safari vehicle to witness the event of two captured big cats being released into a quarantine pen. Wildlife officials from India and Botswana also briefed President Murmu about Boko and Boko about the procedure. Officials said all the 8 cheetahs are in the reserve and only 2 were released for quarantine in the presence of the heads of state as a symbolic gesture of handing over them to India by Botswana. The cheetahs, a mix of adult and sub-adult males and females, have been brought to the nature reserve from the Ghanzi town located in the Kalahari Desert that forms 70% of the landmass of this southern Africa located country. The Mokolodi Reserve, spread over 3,700 hectares, is a private not-for-profit game reserve that was created in 1994. It is inhabited by rhinoceros, giraffes and a variety of indigenous African bird and reptile species, some of which are rare and vulnerable to the threat of extinction as per official information. All 8 cheetahs are expected to reach India in the next few weeks after completion of the quarantine process here. President Murmu is on a 3-day state visit to Botswana, which concludes on Thursday, November 13th. Yeah. Big one. Hello, sir.
Thank you. Now that we have completed the And tourism, distinguished guests present here, ladies and gentlemen, I am delighted to be here for this very special occasion, the symbolic handover of these beautiful cheetahs to India. On behalf of the government and the people of India, I wish to convey our deep appreciation to the government of the Republic of Botswana for this gesture. The gifting of these cheetahs is a reflection of Botswana's commitment to wildlife conservation. These cheetahs will join their brothers and sisters in India's Kuno National Park, helping us to restore the species of this historical habitat and enduring their long-term cycle. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। Welcome back. In a shocking story from Assam, a third-year medical student of Lakhimpur Medical College and Hospital in Assam's Lakhimpur district, who originally hails from Bihar, has been arrested on charges of attempted to rape on a fellow female student of the same medical college. According to police sources, the incident had allegedly taken place on Monday afternoon, and the victim, a student from Assam, lodged a police complaint on Wednesday. Police sources further added that the complaint letter had stated that the incident occurred within the college premises during an examination when the victim went to the washroom during the exam. She was followed by the accused, who allegedly suddenly dragged her into a room. She then informed the authorities and next day approached the cops. BJP National General Secretary Organization B.L. Santosh and BJP MP and Northeast State Coordinator Sambit Patra on Thursday visited Churachandpur as part of their organizational and relief review tour. Sambit Patra attended a meeting with village chiefs and the Development Council of the particularly vulnerable tribal group, Maram tribe, at the DRDA office in Senapati district headquarters. Office bearers from BJP Senapati district and Mandal units were also present. The leaders later visited the Sadbhavna Mandap Relief Center in Churachandpur, where they distributed relief materials to internally displaced persons and interacted with children at the center. They also held discussions with BJP office bearers from Churachandpur district, reviewing the prevailing situation, development initiatives and ongoing organizational activities. The district president, MLAs and senior leaders attended the meeting. Meanwhile, BJP Manipur informed that B.L. Santosh and Sambit Patra received a warm and enthusiastic welcome from BJP Churachandpur district president Thangam Haukip and party leaders upon their arrival in the district. In Arunachal Pradesh, the indigenous youth organization has voiced concern over what it describes as the growing presence of illegal immigrants in the state. Organization President Sonam Liak clarified that the group is not against any particular community but is opposed to infiltrators allegedly settling in the state after being evicted from Assam. He claimed that this influx has led to an increase in the construction of madrasas and mosques across Arunachal Pradesh.
Emphasizing that the state remains secular, Liak said it is the organization's duty to ensure that illegal immigrants are removed. Further stated that the ultimatum period has expired, and while they will continue to press their demands before the government, they are prepared to intensify their agitation, including strikes, bandh calls or other actions if the concerns are not addressed. अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ नेशंस जो है, आपने आप लोग का ही माध्यम से देखा होगा, जो हमने सरकार को जो दिया था, कुछ पॉइंट्स हम लोग उसको सबमिट किया था। हम लोग का क्लियर स्टैंड है, यहाँ में जो इमिग्रेंट्स को लेकर है कंसर्न, जो सिटीजनशिप भी देखना है। हम सब समुदाय को लेकर यहाँ में किसी मुस्लिम को पार्टिकुलर बोल के नहीं है, हिंदू को पार्टिकुलर बोल के नहीं है, बस जो अवैध रूप से घुसपैठ होके रखा है हमारा स्टेट में, उसका खिलाफ है। और साथ ही साथ यहाँ में आप देख सकता है, अभी जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का प्राइड, हमारा जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, वहाँ का जो आसाम का मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से वहाँ से कदेर रहा है घुसपैठ को, वो डस्टबिन का जैसे हमारे स्टेट में अभी आ रहा है, उसको अभी निष्पक्ष जांच करना सरकार का ड्यूटी होता है। फिर भी हम लोग सरकार को बता रहे हैं कि हमारा यहाँ में ज़्यादा ही घुसपैठ हो रहा है। उसी घुसपैठ के कारण से हर जगह में पंचखाना, ये जो मस्जिद मदरसा वगैरह बन रहा है। और हमको रिप्लाई भी आया है कि यहाँ मदरसा नहीं है, मदरसा था उसको डिसमेंटल किया गया है। तो ये सब चीज़ जो हमारा एक जो है, आप देख सकता है, हमारा जो एक है भूटान बॉर्डर से, एक है चाइना बॉर्डर से, एक है म्यांमार बॉर्डर से। तो यहाँ में हमारा जो बॉर्डर से भी बहुत इफेक्ट है। इसीलिए जितना भी घुसपैठ है, हमारा सेकुलर स्टेट है, इसको हम लोग डिफेंस करना, यहाँ से घुसपैठ को निकालना, यहाँ से कदेरना, वो हमारा ड्यूटी है। और हम बिंग इंडिजिनियस, इसमें हम लोग स्टैंड है। वो जो अभी जो हाल ही में हुआ है, हम लोग बहुत दुख है, रेड फोर्ट में जो हुआ था, उसको हम लोग जो वहाँ में जो अपना जो जान को गवाया है, उसका परिवार को भी हम लोग बहुत दुख लगता है। और दुख है हम लोग, क्योंकि सब हमारा इंडियन ही है जो वहाँ में होने वाला। और वो अकेला नहीं है, हम पुलवामा का भी जिक्र किया था, पहलगाम का भी जिक्र किया था। वहाँ में जो हमारा पुलवामा में जो 40 जो शहीद हुआ था, हमारा सीआरपीएफ जवान जो है वो इंडियन था, लेकिन जो अटैक करवाया है वो तो घुसपैठ था ना। उसको हम वही बोलेगा कि उसको हम दाग देता है, टेररिस्ट का दाग देता है। जो ये जो पहलगाम में जो हुआ था, 26 लोग वहाँ में पूछ कर उसको मारा गया है। आप हिंदू है ना क्रिश्चियन है ना, पूछ के मारा गया है। वो क्या वो टेररिस्ट जो है बाहर से नहीं है क्या? तो वो चीज़ जो है हमारा आने वाला समय के लिए खतरा है, स्टेट के लिए, अरुणाचल टोटली खतरा है। तो आज जिस प्रकार से हमारा यहाँ में इलीगल घुस रहा है, अभी ट्रेन स्टेशन से ऐसे ही घुस रहा है। ILP2 मतलब जो हमारा यहाँ में 1873 बंगाल ईस्टर्न जो रेजुलेशन एक्ट है, जो तहत हम लोग जो बनाया है ILP और पास, ये तो अभी नाम का हो गया। इसको बारीकी से सरकार चेक नहीं कर रहा है। आप दूसरा स्टेट में, दूसरा कंट्री में जाइए ना, आप एक वीज़ा बनता है, वो वीज़ा जो है टाइमिंग का होता है, 15 दिन का, 20 दिन का टूरिस्ट के लिए। लेकिन जब निकलता है तो उसका भी बारीकी से चेक किया जाता है। हमारा यहाँ तो डस्टबिन का जैसे घुस रहा है, ILP सही है ना नहीं है, गार्जियन सही है ना नहीं है, तो उसको हम सरकार को यही मांग करते हैं, आप लोग उसको चेक एंड बैलेंस करना है। उसी का घुसने का, घुसपैठ के कारण से तो आज हर जगह में फैला हुआ है हमारा जो इमिग्रेंट्स मियाँ भाई लोग, उसी कारण से तो हर जगह में पंजाखाना है, मस्जिद है। तो इस जो अवैध रूप से बनाया है, इसको डिसमेंटल क्यों नहीं करेगा? हम तो बोला है, मेरा जो अल्टीमेटम खत्म हो गया, फिर भी हम लोग एक दो वॉइस है हमारा सरकार तक पहुंचाएगा रिपीट। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली हम लोग को जो स्ट्राइक या बंद कॉल या हम लोग को इलीगली तोड़ना है, जो भी करना है हम लोग करेगा इसमें। मैं तारो सोनम लियाक, अभी फिलहाल मैं जो अध्यक्ष हूँ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। और हमारा जो मुहिम जो है, इशू जो है, इसमें हम किसी को पार्टिकुलरली एक कम्युनिटी को लेकर नहीं है। और यहाँ में मेरा जो मुस्लिम भाई है, जो बिहार से, यूपी से, पटना से, हैदराबाद से, कहीं से भी हमारा स्टेट में जो यहाँ बिजनेस कर रहा है, वो लीगली कर रहा है, उसका हम सपोर्ट है। लेकिन जो इलीगल है, क्लियर कट, उसके लिए तो हमारा यहाँ में कोई जगह नहीं है। We'll be right back after another break, so stay tuned for more news. सबसे नतुन खबर और जानकारी गानी त्यादो पाबी अपनी लगा निजोर भाषा नागामिस्ते
Hodai Sham 6 bajire Hornbill TV laga Nagamese News Bulletin pra kude apni pabo dangor khobor laga headlines local khobor aro Nagaland aro bahar de hoi thagya development khan apni dukan simple aro clear Nagamese pra sabole parbo jankari loi thagibi connect hoi gina thagibi Hornbill TV logote. Welcome back. In Chhattisgarh's Bijapur district, 6 Naxals were killed in an encounter with security forces and a cache of weapons was recovered from the site. Inspector General of Police Bastar Range P. Sundaraj said that on November 11th, based on intelligence inputs regarding the presence of CPI Maoist cadres, teams from the Bijapur DRG, Dantewada DRG, STF and other security units launched a coordinated operation. During the operation, multiple exchanges of fire took place between the security forces and the Maoists. Following the encounter, the bodies of 6 Maoists, including 3 women, were recovered. Those killed have been identified as Divisional Committee Member Kana, who was in charge of the Central Area Committee Member Jagat, and cadres Mangali and Bhagat, among others. दिनांक 11 नवंबर को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क के कांदुनार क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी, एसटीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 10 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 6 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें 3 महिला माओवादी, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा घटनास्थल से बरामद की गए थे। और इस मुठभेड़ के पश्चात 2 इंसास, एक 303, एक 9mm स्टैंड गन और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर बुच्चा उर्फ कन्ना के रूप में हुई, जो मध्य एरिया कमेटी के इंचार्ज हैं, और दूसरा और अन्य एरिया कमेटी मेंबर जगत और पार्टी मेंबर्स मंगली, पार्टी मेंबर्स भगत, और इस प्रकार टोटल 6 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती हुई है। और मुठभेड़ स्थल के आसपास अभी भी डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा लगातार एरिया को सर्चिंग कर रहा है। और बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत समय में जो प्रभावी रूप से संचालित की गई अभियान के परिणाम स्वरूप अब तक विगत 20 महीने में लगभग 450 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। इसमें सीपी माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर्स और अन्य पीएलजे फॉर्मेशन कैडर्स और काफी बड़ी संख्या में AK-47, LMG, इंसास, SLR, इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। इस परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। इस बात को समझते हुए काफी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में माओवादी कैडर्स, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKSFC और अन्य सीनियर फॉर्मेशन कैडर्स भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में बंदूक के बल पर हिंसात्मक गतिविधि अंजाम देने के लिए भी कोई कोशिश कर रहा है, उनके पास भी। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye. Copy that. Yes, I'm in his makeup room. Yes, I'll get the dialogues done. Okay. और लंच किया? बस थोड़ा